कवचम श्रीमदानंद रामायणांतर्गत श्री हनुमत कवचम। ओम श्री हनुमते नमः। ओम अस्य श्री हनुमत कवच स्तोत्र महामंत्रस्य श्री रामचंद्र ऋषिः श्री हनुमान परमात्मा देवता अनुष्टुप छन्दः मारुतात्मजेति बीजम् अंजनी सोनोरीति शक्तिः लक्ष्मण प्राणदातेति कीलकम् रामदूतायेति अस्त्रम् हनुमान देवतायेति कवचम् इंगाक्षोभित विक्रम इति मंत्रः श्रीरामचंद्र प्रेरणया रामचंद्र प्रीत्यर्थम् मम सकल कामना सिद्ध्यर्थम् जपे विनियोगः अधकरन्यासः। ओम राम अंजनी सुताय अंगुष्ठाभ्यां नमः। ओम ह्रीं रुद्रमूर्तये तर्जनीभ्यां नमः। ओम रों रामदूताय मध्यमाभ्यां नमः। ओम ह्रैं वायुपुत्राय अनामिकाभ्यां नमः। ओम रों अग्निगर्भाय कनिष्ठिकाभ्यां नमः। ओम रः ब्रह्मास्त्र निवारणाय करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः। अथाङ्गन्यासः। ओम रां अंजनीसुताय हृदयाय नमः। ओम ह्रीं रुद्रमूर्तये शिरसे स्वाहा। ओम रों रामदूताय शिखायै वसट। ओम ह्रैं वायुपुत्राय कवचाय हुं। ओम रों अग्निगर्भाय नेत्रत्रयाय वषट। ओम रः ब्रह्मास्त्र निवारणाय अस्त्राय फट। भूर्भुवः स्वरोमेति दिग्बन्धः अथ ध्यानम् ध्यायेत् बालदिवाकरद्युतिनिभम् देवारिदर्पापहम् देवेन्द्र प्रमुखम् प्रशस्त यशसम् देदीप्यमानम् रुचा सुग्रीवादि समस्त वानरयुतम् सुव्यक्ततत्त्वप्रियम् संसक्तारुणलोचनम् पवनयम् पीताम्बरालङ्कृतम् उद्यान्मार्तण्डकोटिप्रकटरुचियुतम् चारुवीरासनास्थम् मौञ्जी यज्ञोपवीताभरणरुचिशिखम् शोभितम् कुण्डलाङ्गम् भक्तानामीष्टदम् तम् प्रणतमुनिजनम् वेदनाद प्रमोदम् ध्याये देवम् विधेयम् प्लवगकुलपतिम् गोष्पदीभूतवार्धिम् वज्राङ्गम् पिङ्गकेशाढ्यम् स्वर्णकुण्डलमण्डितम् निगूढमुपसङ्गम्य पारावार पराक्रमम् स्फटिकाभम् स्वर्णकान्तिम् द्विभुजम् च कृताञ्जलिम् कुण्डलद्वय संशोभितमुखाम्भोजम् हरिम् भजे सव्यहस्ते गदायुक्तम् वामहस्ते कमण्डलम् उद्यद्दक्षिणदोर्दण्डम् हनुमन्तम् विचिन्तयेत् अथ मन्त्रः। ओम नमो हनुमते शोभिताननाय यशोलङ्कृताय अञ्जनीगर्भसम्भूताय रामलक्ष्मणानन्दकाय कपिसैन्यप्रकाशन पर्वतोत्पाटनाय सुग्रीवसहायकरण परोच्चारण कुमार ब्रह्मचर्य गंभीर शब्दोदय। ओम ह्रीं सर्वदुष्टग्रह निवारणाय स्वाहा। ओम नमो हनुमते एहि एहि सर्वग्रह भूतानां शाकिनी शाकिनीनां विषमदुष्टानां सर्वेषामाकर्षयाकर्षय मार्दय मार्दय छेदय छेदय मर्त्यान् मारय मारय शोषय शोषय प्रज्वल प्रज्वल भूतमण्डल पिशाचमण्डल निरसनाय भूतज्वर प्रेतज्वर चातुर्थिक ज्वर ब्रह्म राक्षस पिशाच छेदनः प्रिया विष्णुज्वर महेश ज्वर छिन्दी छिन्दी भिन्दी भिन्दी अक्षिशूले शिरोभ्यन्तरे अक्षिशूले गुल्मशूले चित्तशूले ब्रह्म राक्षस कुल प्रबल नागकुल विष निर्विष झटिति झटिति। ओम ह्रीं फट खेके स्वाहा। ओम नमो हनुमते पवनपुत्र वैश्वानरमुख पाप दृष्टि शोधा दृष्टि हनुमते गो अद्यापुरे स्वाहा। स्वगृहे द्वारे पट्टके तिष्ठ तिष्ठेति तत्र रोग भयं राजकुल भयं नास्ति कश्चोच्चारण मात्रेण सर्वे ज्वरा नश्यन्ति। ओम रां ह्रीं रों फट् घे घे स्वाहा। श्री रामचंद्र उवाच हनुमान् पूर्वतः पातु दक्षिणे पवनात्मजः अधस्तु विष्णु भक्तस्तु पातु मध्यं च पावनीः लङ्का विदाहकः पातु सर्वापद्भ्यो निरन्तरम् सुग्रीवः सचिवः पातु मस्तकं वायुनन्दनाः कालं पातु महावीरो
भ्रुवोर्मध्ये निरन्तरम् नेत्रे छायापहारी च पातु नः कल्पकेश्वरः कपोले कर्णमूले च पातु श्रीराम किङ्करः नासाग्रम् अञ्जनीसूनुः पातु वक्त्रम् हरीश्वरः वाचं रुद्रप्रियः पातु जिह्वां पिङ्गललोचनः पातु देवः फाल्गुनेशः चिबुकं दैत्यदर्पः पातु कण्ठं च दैत्यारिः स्कन्धौ पातु सुरार्चिताः भुजौ पातु महातेजः करौ च चरणायुधः नगरन्नखायुधः पातु कुक्षौ पातु कपीश्वरः वक्षो मुद्रापहारी च पातु पार्श्वे भुजायुधः लङ्कानिभञ्जनः पातु पृष्ठदेशे निरन्तरम् नाभिं च रामदूतस्तु कटिं पातु निलात्मजः गुह्यं पातु महाप्राज्ञो लिङ्गं पातु शिवप्रियाः ऊरु च जालुने पातु लङ्काप्रसादभञ्जनाः जङ्गे पातु कपिश्रेष्ठो गुल्फौ पातु महाबलः अचलोद्धारकः पातु पादौ भास्करसन्निभः अङ्गान्यामितसत्त्वाढ्यः पातु पादाङ्गुलिस्तथा सर्वाङ्गानि महाशूरः पातु रोमाणि चात्मवेत् हनुमत्कवचं यस्तु पठेत् विद्वान् विचक्षणाः स एव पुरुषः श्रेष्ठो मुक्तिं च विन्दति त्रिकालमेककालं वा पठेन्मासत्रयं नराः सर्वान् रिपून् क्षणान् जित्वा स पुमांस्त्रियमवाप्नुयात् इति श्रीशतकोटिनामचरितान्तर्गतो श्रीमदानन्दरामायणे वाल्मीकीय मनोहरकाण्डे श्रीहनुमत्कवचं सम्पूर्णम्।